In today's class, we are going to cover the last topic of unit number 3, that is assignment model. We will quickly go through the basic and fundamentals so that we will spend more time on to the okay. Sorry for this issue. So, need of this assignment problem or assignment model is whenever we need to assign particular operator to job. अगर आपको असाइनमेंट करना है कि you have some operators, machine operators, and you have 3-4 variants of the component or the jobs. You need to assign the particular job to particular operator. Now here your aim will be either you would like to manufacture all the components in a least time, or you would like to minimize the machining cost here. Then sometimes you need to, as a management or manager, you need to assign job to particular machine instead of a personal to particular machine, or machine to certain job locations, or another case will be a salesperson to particular territory. You have a number of customers, particular customers in certain territory, in certain areas. For example, Katras mein you have 100 customer, then in upper Indiranagar you have 50 customer. So which salesperson, you have 2-3 salesperson, you would like to assign particular salesperson to particular territory based on his experience, based on how many customer he can cover in a single day, and how many customers are available in that particular area. So by thinking of all these, you would like to minimize the in that case, in the sales case, you would like to maximize the profit, or you would like to minimize the transportation time or transportation cost in that. So these are the some few examples of assignment model. Again, I'll explain in the matrix bit, because this matrix you are going to see in many numericals. So these are rows represent jobs. In certain cases, rows might be representing operator. Then columns represent machine, and this number represents either two of these things. Either they will represent machining cost, or it will be machine time. So to understand this matrix, see job A. If this job a particular component, is assigned to machine X, it is going to take 25 minutes to finish it. Machine Y is little advanced. If we assign that job A to machine Y, that job will finished in only 15 minutes. Then if the same job is assigned to another machine, machine Z, it is going to be finished in 22 minutes. So these are the time taken by that particular machine to finish the jobs A, B, and C. So this way you understand the matrices of assignment model. The assignment model is a special case of transportation model where these job represent sources and these machines represent destination. So you need to send this one job to a destination or machine. But here the allocation, unlike transportation model, the allocation will be one only. That means this job A will be allotted to X by one unit only. हमने असाइन कर दिया कि जॉब ए एक्स को दे दिया. Again I'll explain this in the
another case, operator's case. So imagine we have operator Sanju, Manju, and Tinku. Okay, and these operator we need to assign to particular machines. So we have one lathe machine, one milling machine, and one CNC. Okay, so this Sanju, if we assign a lathe machine, he is going to charge us ₹10, और मिलिंग पे अगर उसको असाइन किया तो वो ₹20 चार्ज करेगा, अगर सीएनसी पे लगाया तो ₹30 चार्ज करेगा. Then next person, it will take ₹10 for all the cases. This one, he may take ₹20 for 2 cases and CNC pay maximum. Okay, so these are our operator. So operator comes at morning 8 o'clock and now we need to assign them particular machine कि भाई तू जाके वहां पे lathe machine, milling machine और CNC पे खड़े रह जा and do the work. Okay, so in assignment model we assign only one person, one operator to one machine. That means only one allocation, one unit of allocation is available for us, because this Sanju, I cannot assign two machine to a single operator. उस बंदे को एक दिन में सिर्फ एक ही मशीन पे ऑपरेट करने को बोलेंगे हम. Simultaneously he cannot work on two or more machines. So remember, it's kind of a transportation model only, but the number of allocation are only one. In transportation हम based on supply and demand हम ज्यादा भी कर सकते थे कि भाई 100 component जाएंगे like this, but here we need to assign only one. ठीक है, I hope it is clear now. And objective of this assignment model is to minimize the total cost or to minimize the total time. If you are facing some maximization case like salesperson to particular territory, and in that case you might would like to increase your sale or increase your profit. So in that, your objective is maximization, but the transportation model will not work for the case of maximization. Okay, but you can you can implement the assignment model for the maximization case by changing the sign of this value cost. इसको negative लगा दो. ठीक है, तो आपकी your interest was maximization. Now assign all the cost negative sign. Now change, your objective will be changed to minimization, and then you can implement this assignment model. जो process हम सीखने वाले, you can use that for maximization case too. But it is built, this assignment model is built to minimize the total cost or to minimize the time. ठीक है, this is just a basic theoretical part we have covered now. Next, in our syllabus we are going to study Hungarian method for doing the assignment, for performing assignment. ठीक है, now we will quickly cover the steps. ठीक है, फिर से क्या करते हैं, ये सारे steps we are going to repeat when we see a numerical, when we solve a numerical. ठीक है, so step number 1, prepare a square matrix. Because remember, we have we have 3 operators and we have 3 machines. So machine 1, machine 2 and machine 3. ठीक है, अब एक बंदा एक मशीन को जाएगा, right? So always your payoff table or payoff matrix will be a square matrix. N number of rows, so n number of columns should be there. But in certain cases you might feel that operators are more. आपने वो मजूर अड्डा देखा होगा. So there the number of laborers, number of operators are more, but actual requirement of the machine is less. So in that case, what you need to do, you need to study by adding a dummy machine to it. Okay, it will be a dummy machine.
और अगर मशीन ज्यादा है, ऑपरेटर कम है, तो आप क्या करोगे, एक डमी ऑपरेटर ऐड करोगे, just to balance the matrices, and then you will be able to implement the process. ठीक है, just to do that, add either dummy column or dummy row. This we have covered in unbalanced transportation model. ठीक है, उसी टाइप से आपको करना है. Okay, so if you are facing unbalanced unbalanced assignment matrix, so add dummy row or dummy column to just prepare a square matrix. But in most of the problem statement, you will get the perfect square matrix. Step number 2, from row, select the smallest value. Okay, you have this row number 1, and you will find there are number of 4 cost available. उसमें से सबसे smallest number choose करना है, and then subtract it from each value from that row. Okay, third step, you need to do this for columns also. So select is the smallest number from that column and subtract it from all the values, all the cells. Okay, you have to do this for all rows and all columns. Then you start assigning. जब भी मैं बोलता हूं assignment और assign, in transportation model, the assignment की जगह हम allocation use करते थे. You used to write this kind of box in this. So यहाँ पे transportation cost था और यहाँ पे allocation था. In assignment model, you are going to put assignment like this. Okay, now where should we put the assignment? Whenever you are facing a zero number, and that zero should be independent in the row or independent in the column. Okay, now when you assign, you do the assignment for particular zero, and you will observe that in that row, in that column, there are multiple zeros. So cross out those zeros, because this machine 1 is given to, this operator 1 is assigned to machine 1, right? So machine 1 is now full. This machine 1 cannot be assigned to operator number 2 or operator number 3 or operator number 4, right? So even though the 0 is present there, you cannot do the assignment. So for that, to avoid the confusion of assigning that particular machine again and again, to repeat it, just cross out the 0 in that particular column. Okay, then if you put the assignment in a row, in column, for example, अगर यहाँ पे assignment किया, ठीक है, so यहाँ पे अगर दूसरा कुछ 0 होता तो उसको भी cross out करो, right? Because that operator is assigned to particular machine 2. So already that operator is busy. You cannot assign the same operator to different machine. It is already given to machine number 2. Okay, it's a kind of a common sense only. You have to repeat these steps until and unless all the rows and all the columns have assignment. That means each operator has particular machine to it, or each machine has some kind of assignment by a operator. हमने आपने क्या किया है, वर्कशॉप में हर एक मशीन के ऊपर एक एक ऑपरेटर लगा दिया, फिर हर एक ऑपरेटर को एक एक मशीन दे दी. You can think of like this. Okay, you have to repeat the step until and unless all rows and all columns have at least one assignment, and it will be only one assignment only. Okay. If not, if this doesn't happen, that all rows and all columns don't have assignment, मतलब कुछ ऑपरेटर खाली बैठे या फिर कुछ machines खाली बैठी है, okay, you might hit this kind of scenario. So in that case, you have to follow a procedure of drawing minimum lines. Okay, now I'll just go through the theoretical part. Then as soon as this slide is over, take the screenshot, have that as a reference for you.
then I'll repeat again the process during the solution of a numerical. ठीक है, अब आपको क्या करना है? If you face a numerical where all rows and column doesn't have assignments, okay, so what to do? Step number 1, mark, check mark. ठीक है, mark right to row without assignment. ओके, जो रो में असाइनमेंट अवेलेबल नहीं उसको टिक मार्क कर दो. देन लुक 0 इन दैट पर्टिकुलर रो. ठीक है, एंड मार्क दैट कॉलम. फॉर एग्जाम्पल, you are facing this kind of matrix and here you have assignment, here you have assignment, but in this row the assignment is not available, row number 3. okay, ऐसा कुछ तो भी सिनेरियो है. okay, so this row doesn't have assignment, row number 3, so tick mark करते. then go into that particular row, observe where there is a 0. 0 कहाँ पे? it may be cross out or present like this. ठीक है, अब आपको क्या करना है? जिस जिस कॉलम में वो 0 अवेलेबल है इन द मार्क रो, टिक मार्क, उसको टिक मार्क कर दो. ठीक है, अंडरस्टूड? थर्ड स्टेप, go and now observe that marked column. हमने ऑलरेडी रो में हो गया, चेक करके हो गया, अब कॉलम में चेक करोगे. you will go into that selected or mark column और उस कॉलम में असाइनमेंट ढूंढोगे. ठीक है, जब भी असाइनमेंट मिलेगा आपको, टिक मार्क दैट रो. अगेन आई विल रिपीट, you will start with row without assignment, then जो मार्क किया वाला रो है उसमें फाइंड आउट 0 कहां पे, टिक मार्क दैट कॉलम, then tick mark a row with the assignment in that particular column. थोड़ा confusing है, but later on it will be clear. Then after that, draw the lines. Okay, repeat this process until not possible. सब tick mark हो गए या फिर you will get to a certain situation where there is no row to be marked or column to be marked. Then draw a line. अब लाइन कहां पे ड्रॉ करना है आपको? रो विदाउट मार्क, विदाउट दैट टिक मार्क. ठीक है, वहां पे लाइन ड्रॉ करो. एंड कॉलम विथ मार्क, लाइन ड्रॉ करना है थ्रू कॉलम विच हैज अ टिक मार्क. उल्टा है, रो में अनमार्क होना चाहिए, कॉलम में मार्क होना चाहिए. देन एंड देन ड्रॉ द लाइन. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, दिस इज इंपॉर्टेंट. प्रीवियस स्लाइड वाज वेरी इजी, उसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बट मेनी अ टाइम स्टूडेंट आर गोना फॉरगेट अबाउट these steps. Okay, so have this ready for reference. And then you need to take a screenshot of next slide of 2. Okay, दोनों का ले लो. So I hope you have taken the screenshot. Now we will go for the next slide. अब आपने मार्किंग कर दिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ तो भी लाइंस ड्रॉ कर लिया आपने. देन you have to do 3 tasks. ठीक है, first select a smallest element from the cell without line passing through them. जिसमें ये लाइंस नहीं गई, जिस सेल में से लाइंस नहीं गई ना, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर चूज करो. ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम द एलिमेंट्स विदाउट लाइन पासिंग थ्रू देम. ठीक है, जो खाली पीली बैठे ना इधर, जिसको लाइन से टच नहीं हुआ, उसमें से वो सब्ट्रैक्ट करो. देन जहां पे भी ये लाइन का इंटरसेक्शन आया ना, add that same number, the smallest number, whenever you have a cell with intersection. यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसमें ऐड करना है. ठीक है, and the elements on the line
there will be no change. There will be no change. Okay, take the screenshot of this. I'll again repeat this when we see a numerical. In the assignment model, there are no variations, lot of variations or lot of methods. Only one method is available, Hungarian method, and it is one of the most simple method for solving assignment model. Okay, as this is the first time, you might feel a little confusion, but don't worry. With the habit or after solving two or more numerical, 2-3 numericals, you will be very confident enough to solve the assignment model. In the GATE examination, most of the time you will get at least one numerical on either transportation or assignment. दोनों में से एक normally आता है. Okay, let's see, understand the process for this numerical. Okay, so in this numerical, we are facing 4 jobs for assignment on 4 different machine. So J1, J2, J3, it should be J3 and J4. So these are the jobs to be assigned on machine 1, 2, 3 and 4. Okay, our aim is to assign all the jobs to all the machine, but by doing that we would like to have the minimum machining cost or time. सबसे मिनिमम नंबर जहां पे है उसी को असाइन करना है. फॉर एग्जांपल, दिस जॉब नंबर 1, इफ वी असाइन टू मशीन नंबर 4, इट इज गोइंग टू कॉस्ट अस लेस. उसका कॉस्ट कम है, तो प्रोबेबली दिस J1 जॉब शुड बी गिवन टू मशीन 4. सिमिलरली J2 जॉब देखो, मशीन 1 में 13 रुपए लगने वाले, मशीन 2 पे 28 रुपीज, मशीन 3 पे 14 रुपीज, मशीन 4 पे 26 रुपीज. So we should probably give this job to machine 1. Okay, so this way you proceed. By my mistake, I have written this 1 again and 2 again, copy paste. So this should be 3 and 4. Make this small correction. Okay, so we need to give all the jobs to all the machine, but during that we need to take care of minimizing the cost of machining. Okay, सो डोंट डायरेक्टली जंप ऑन टू दिस कि भाई आप यहाँ पे एक असाइनमेंट करोगे, ये जॉब इधर दोगे. अब जॉब नंबर 3 सबसे कम यहाँ पे है 15 को, बट ऑलरेडी machine 4 is working on J1, job number 1, so we cannot assign like this. So either we need to give 19, or sorry, ये machine 2 or machine 3. Then job number 4, imagine machine 2 is given to job number 3, so only one option is available for us, job 4 के लिए machine number 3. So total transportation, total assignment cost will be 11 plus 13 plus 19 plus 24. So that will be your assignment cost. ठीक है, बट हियर हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं. ये देख के दे रहे, दूसरा देख के चेक कर रहे हैं, एंड वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर कि भाई ये 11 plus 13 plus 19 plus 24 is the minimum assignment cost. Okay, so let's follow a standard mathematical procedure for doing the assignment. Okay, step number 1. Now step 1 and 2 are very easy, सबसे easy है. Step 1 में क्या करना है आपको, select a row. ठीक है, उस रो में सबसे मिनिमम नंबर सेलेक्ट करो, चेक करो. 11 is the least number. Okay, अब ये जो 11 नंबर है, you need to subtract this 11 from each value. So 18 minus 11, 26 minus 11, 17 minus 11, 11 minus 11. Okay, so somehow हमें क्या करना है, इन ईच रो कम से कम एक जीरो आना चाहिए. देन स्टेप नंबर 2 में कॉलम में सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सो दैट ईच कॉलम विल हैव एटलीस्ट 1 0, बिकॉज असाइनमेंट हम सिर्फ जीरो को करने वाले. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. So first number is 11 in the row number 1. So 18 minus 11, 7.
26 minus 11, 15. 17 minus 11, 6. And 11 minus 11, 0. Done. Then go to row number 2. यहाँ पे लीस्ट नंबर है देखो 13. ठीक है, डू द सब्ट्रैक्शन. 13 minus 13, 0. 28 minus 13, 15. 14 minus 13, 1. 26 minus 13, 13. ठीक है, रो नंबर 2 पे भी आपने काम कर लिया. देखो रो नंबर 1 में एक 0 आया, रो नंबर 2 में एक 0 आया. अब रो नंबर 3 में चले जाते. Select the least number 15 and subtract it from all the values. So 38 minus 15, 23. 19 minus 15, 4. 18 minus 15, 3. 15 minus 15, 0. Understood? Go for row number 4. सबसे लीस्ट नंबर देखो क्या है 10. अब 10 माइनस करेंगे from 19, so it will be 9. Here it will be 16. Here it will be 14. Okay, and 10 minus 10, 0. I hope you all understood the step number 1. Then this step is called as a reducing the matrix. Okay. अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं फॉर कॉलम्स. ओके, सेलेक्ट द फर्स्ट कॉलम, M1 का कॉलम. द लीस्ट नंबर इज 0. अब देखो 7 में से 0 गए, 7 रिमेनिंग, 0 में से 0, 23 में से 0, 9 में से 0, इट विल रिमेन सेम, सो नो इफेक्ट. देन गो फॉर रो नंबर, सॉरी, कॉलम नंबर 2, M2. यहाँ पे लीस्ट नंबर है 4. चलो माइनस करते हैं. 15 माइनस 4, 11. 15 माइनस 4, 11. 4 minus 4, 0. 16 minus 4, 12. Got it? Then go for column number 3. Least number is 1. So 6 minus 1, here we'll get 5. 1 minus 1, 0. 3 minus 1, 2. 14 minus 1, 13. Okay. Then go to the column number 4. Column number 4 has a 0 as a list number, तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा. If we subtract 0 from all the cells, it will remain same. So step 1 and step 2 over. Now we will proceed for step number 3, assignment. अब आपको क्या करना है, assignment करना है. Now listen carefully. Always start with row. ठीक है, देन सारे रो खत्म हो गए, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से स्टार्ट करोगे कॉलम से. सारे कॉलम खत्म हो गए, फिर से आप स्टार्ट करोगे रो में. दिस प्रोसेस. नाउ व्हाट प्रोसेस वी नीड टू फॉलो. आई विल गो विथ रो नंबर 1. डू द असाइनमेंट व्हेन यू फाइंड 0 देयर. अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे असाइनमेंट कर दिया हमने. अब सी, मशीन 4 को जॉब नंबर 1 इज असाइन. नाउ machine 4 is busy for complete day because he is going to work on job number 1. That means machine 4 is not available for job number 2, job number 3, job number 4. Right? So cross out any confusing 0, क्योंकि हम क्या करते हैं, असाइनमेंट सिर्फ 0 को देते हैं ना, तो क्या करो, बाकी वाले 0 है ना, वो कैंसिल कर दो. I hope all of you understood this. Okay, so assignment to first 0 from that row, and for that column cross out any remaining 0, cancel कर दो बाकी के 0 from that column. Then go to row number 2. Now in row number 2 there are two options, machine 1 and machine 3. You can do assignment to machine 1 and machine 3. In this case we don't have independent 0.
राइट, क्योंकि दो ऑप्शंस है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जीरो नहीं है, स्किप दिस, रो स्किप कर दो, गो टू द नेक्स्ट रो नंबर 3। नाउ रो नंबर 3 में देखो इंडिपेंडेंट जीरो है क्या यहाँ पे? यस, वी हैव दिस इंडिपेंडेंट जीरो, सो डू द असाइनमेंट टू दैट जीरो। ठीक है, फिर उस कॉलम में, बिकॉज M2 मशीन 2 इज गिवन टू दिस जॉब नंबर 3, सो मशीन 2 में अगर कहीं पे जीरो होता तो उसको क्रॉस कर देंगे। ओके, देन गो टू रो नंबर 4। यहाँ पे देखो जीरो कुछ भी नहीं है, जीरो एक था वो भी कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, सो ऑल रो हमने चेक कर लिए। अब क्या करो, चेंज इट टू द कॉलम, गो टू कॉलम नंबर 1। यहाँ पे जीरो देखो, एक जीरो अवेलेबल है, सो इट इज अ इंडिपेंडेंट जीरो, राइट। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, देखो यही जीरो अवेलेबल है इन द कॉलम। In this column only one zero is available, so give the assignment to that zero. अब देखो job number 2 is given to machine 1, so job number 2 चला गया, right? So job number 2 cannot be given to machine number 3 or 4 or any other machine, right? So to avoid the confusion हम क्या करेंगे, ये zero cancel कर देंगे, because already this job is given to machine 1, you cannot give that job to machine number 3, so cancel this zero. ओके, सो कॉलम नंबर 1 चेक, कॉलम नंबर 2 ऑलरेडी असाइनमेंट हो गया है, कॉलम नंबर 3 नो, वी डोंट हैव एनी जीरो, so that means we cannot do assignment in column 3. go to column number 4, already assignment हो गया यहाँ पे, that's it. again check the column rows, assignment done, assignment done, assignment done, but no zero, no zero, so no assignment, we cannot do the assignment here. So step number 3 is over. Any doubt? Please let me know. Because आगे वाला step थोड़ा complicated चालू हो जाएगा देखो. So make sure that all of you have understood up to this process. Okay, so if you don't have any doubt, let's proceed. अब आपको क्या करना है, तो जो नेक्स्ट मैंने स्क्रीनशॉट लेने को बोला था ना आपको, that steps we need to follow, because see we had 4 jobs and 4 machines, but if you look at the assignment, job 1 is given to job machine 4, job 2 is given to machine 1, job 3 is given to machine 2, job 4 job 4 we haven't assigned to any machine, as well as machine 3 hasn't been allotted to any job. ठीक है, तो बाकी अपना प्रॉब्लम, ओनली 3 असाइनमेंट्स आर डन, नॉट 4, वी रिक्वायर्ड 4 असाइनमेंट, क्योंकि 4x4 मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, स्टार्ट विथ मार्क। अब देखो मार्किंग कैसा करना है, मार्क ए रो विदाउट असाइनमेंट। अब देखो दिस रो नंबर 4 डजंट हैव असाइनमेंट, उसको टिक मार्क करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, उस रो में लुक एट जीरो, मार्क दैट कॉलम, then in that column look for assignment, look for assignment, mark that row. ठीक है, I'll repeat again, you will start with unmark or sorry unassigned row. ठीक है, जो unassigned row है ये है, टिक मार्क कर दिया, जीरो इन दैट रो, इस रो में जीरो को फाइंड करो, मार्क दैट कॉलम, जहां पे भी जीरो मिला वो कॉलम को टिक करो,
अब इस रो में यहाँ पे 0 है तो उसको टिक कर दिया हमने। 3। अब चेंज करो कॉलम टू रो, मार्क रो विथ टिक्ड वाला कॉलम। ठीक है, ये जो टिक वाला कॉलम है उसमें असाइनमेंट किधर है, इधर, मार्क दैट रो। ठीक है, एंड रिपीट दिस अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब चेक करेंगे, दिस इज मार्क्ड रो, राइट। लुक फॉर 0 इन दैट, लुक फॉर दैट 0 इन द रो, इन दैट रो। यहाँ पे 0 है, टिक दैट कॉलम, टिक दैट कॉलम। टिक वाला कॉलम में असाइनमेंट देखो, हियर वी हैव असाइनमेंट, मार्क दैट कॉलम, सॉरी मार्क दैट रो। सो हम क्या हो रहे हैं, लूप में काम कर रहे, गोल गोल घूम रहे। फर्दर यू कैनॉट टिक एनी रो और एनी कॉलम, दैट्स इट, यू स्टॉप हियर। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, नाउ लाइंस कहाँ पे करनी है ड्रॉ, उल्टा है देखो, ड्रॉ लाइंस इन अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम। उल्टा है, लाइन कहां से ड्रॉ करना है, इन अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम। ओके, सो किधर है मार्क, किधर है, यहाँ पे देखो अनमार्क्ड लाइन था, सॉरी अनमार्क रो है, सो ड्रॉ द लाइन लाइक दिस। अनदर रो विदाउट मार्क, राइट। नाउ लुक फॉर मार्क, मार्क किधर है, सो मार्क इधर है, इन दैट कॉलम, सो मार्क द लाइन। So do this line. Now if you observe number of lines, count the number of lines. How many are they, 3. Okay, and how many assignments you have present in the current situation, 3. So always remember, the number of lines, number of drawn lines will be equal to number of assignment. Okay, so in 4 by 4 matrix, in the 4 by 4 matrix, if you do 4 lines, that means 4 assignments are already present. Or if you have 4 assignments, the minimum number of lines that can cover all 4 assignments is equal to 4. So this is the procedure of minimum, drawing minimum number of lines. Okay, now fifth step, see, look at this situation, current matrix. These are the cells who don't have line passing from them. So see, there are 6 numbers without any line passing from them. Okay, now in that cell, unmarked or without line वाला जो cells है ना, उसमें से least number देखो कौन सा है, 7, 11, 5, 9, 16, 13. So least number is 5. Okay, least number is 5. ये select कर लिया हमने। अब 3 टास्क करने आपको, subtract, add and no change। ठीक है, okay, I hope I am audible. So this 5, so this 5 we need to subtract from
सेल्स विदाउट लाइन, ठीक है। तो 7 में से 5 गए 2, 11 में से 5 गए 6, 5 में से 5 0, 4, 11 एंड 8, ठीक है। अब ऐड कहां पे करना है? जहां पे इंटरसेक्शन है ना, लाइन का इंटरसेक्शन है, सो 13 पे इंटरसेक्शन है, सो ऐड 5 टू इट, सो इट विल बिकम 18। देन यहाँ पे भी देखो 0 है at intersection, so add 5 to it, so it will become 5। and then remaining element जो है, जहां में लाइन जा रहा है, प्लेन लाइन जा रहा है, देखो 0, 11 ये वाला, यहाँ पे no change, don't do any changes in that। so this is your process, this is your Hungarian method, okay। so 7 minus 5 is 2, 11 minus 5 6, 5 minus 5 0, then 13 plus 5 18, 0 plus 5 5, then 13 minus 5 8, 16 minus 5 11, 9 minus 5 4, that's it। And there will be no change in this 0, 11, 0, 0, 2, 0, 23 and 0, no change in that, okay। so after this, after doing that summation, you will get to this point। okay, Hemant is asking why chosen 5? okay okay, so these are the cells without line, 7, 11, 5, 9, 16 and 13, ठीक है। आपको क्या करना है? You need to just observe these cells without line and choose the least number, सबसे कम वाला नंबर चूज करना है। लाइक अर्लियर प्रोसेस, हमने रो में कम नंबर देखा था, कम वैल्यू ले ली थी, और कॉलम में भी कम वैल्यू ली थी एंड सबट्रैक्ट किया था, सेम प्रोसेस करना है बट विदाउट लाइन, ठीक है। दैट्स व्हाई 7, 11, 5, 9, 16, 13, least number is 5, so that's why we have chosen 5, ठीक है। and this 5 we need to subtract from without line wale cell and add whenever there is intersection, and with line wale cell jo hai wahan pe no change, that's it। okay, so this is your final result, okay। अब फिर से आप क्या करोगे? you will start doing the assignment। row number 1, there are 2 0, दो ऑप्शन है, don't do the assignment। go to row number 2, यहाँ पे भी 2 options are there, don't do the assignment। row number 3, only 1 0, so give the assignment, give the assignment। then असाइनमेंट होने के बाद उस कॉलम में देखो कहीं 0 है क्या, अगर कुछ 0 होता तो कैंसल इट आउट और पुट द क्रॉस इनटू दैट 0। no, go to row number 4, 4, 11, 8, 0, yes, there is a 0 and it is independent, right। so do the assignment for this and उस कॉलम में जो 0 है उसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, अंडरस्टूड। then go to the column, I'll repeat up to this part, ठीक है। then go to the column number 1, is 0 independent? yes, यहाँ पे एक ही 0 अवेलेबल है। give the assignment, so job 2 is engaged, तो दूसरा 0 कैंसिल कर दिया। then go to column number 2, already assignment is done, so no problem। go to column number 3, independent 0 है क्या? yes, यहाँ पे एक ही 0 अवेलेबल है, बिकॉज ये दूसरा 0 हमने क्रॉस कर दिया है, so only 1 0 is available, we are going to give assignment to it, ठीक है। so that will be your solution। see, row 1
असाइनमेंट अवेलेबल है, रो 2 पे असाइनमेंट है, रो 3 पे असाइनमेंट है, रो 4 में भी असाइनमेंट है. Look for the column 1 has assignment, column 2 has assignment, 3, 4. So all machines are now given by certain job, or all jobs are given to particular machine. Okay, so J1 is given to machine number 3, J2 is given to machine number 2, J3 is given to machine number 2, J4 is located on machine number 4. So that will be your solution. So assignment is over. So your question will be, what is the minimum assignment cost? Okay. So the assignments are given like this. वहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट था आपका न्यूमेरिकल गिवन था, वहां पे गए, वहां पे मार्क कर दिया आपने स्क्वायर्स ऑन ईच असाइनमेंट, and then you just add them together. So minimum assignment cost becomes 17 plus 13 plus 19 plus 10, which is equal to 59. जो हमने अर्बिटरी सोचा था, देखो वो क्या था, 11 plus 13 plus 19 plus 24. That was our thought process, manual, without any mathematical procedure. तो वहां पे बहुत ज्यादा 59 से you will get the more number, right? So in this case, this is the least assignment cost that could be achieved. Okay, so I hope all of you have understood the assignment model. What I'll do, I'll quickly solve one more numerical because we have 10 minutes of time, and during that, if you are facing any difficulty, let me know. Okay, so this is our problem. There are 4 operator 1, 2, 3 and 4, and there are 4 jobs, job 1, job 2, job 3 and job 4. अब हमको क्या करना है, एक एक ऑपरेटर को एक एक जॉब दे देना है, such that we should be going with the least assignment cost. ठीक है, तो फॉलो करते हैं प्रोसीजर. स्टेप नंबर 1 में क्या किया था हमने, रो नंबर 1 पे गए, लिस्ट नंबर देखा, दैट इज 5. 5 माइनस करेंगे फ्रॉम द कंप्लीट रो, so this will become 0, this will become 2, then 6 and 1. Okay, next रो नंबर 2, लिस्ट नंबर क्या है, 5, सबट्रैक्ट करेंगे, 8 becomes 3, this will become 0, 4, 1. ठीक है, रो नंबर 3, सबसे लीस्ट नंबर है 4, माइनस करो, यहाँ पे 0 बनेगा, 3, 6, sorry, it will become 3. Then last row, 3 is the minimum number, so minus करेंगे, so here 7, 1, 5 and 0. Okay, आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, ये you will get the new matrix like this. अब कॉलम में जाएंगे, कॉलम चूज करते हैं, I'll change the color. तो देखो 0 माइनस किया तो कुछ नो चेंज, यहाँ पे भी कॉलम नंबर 2 में भी लीस्ट कॉस्ट इज 0, नो चेंज. गो टू कॉलम नंबर 3, द लीस्ट नंबर इज 6, तो माइनस करो सब सेल से, so here it will become 2, 0, 2 and 1. So your updated matrix will be like this. Now see, you have done the row operation and column operation. सब रो और कॉलम में कम से कम एक एक जीरो आ गया. We will take that and we will start doing the assignment. Okay, so go to row number 1, एक जीरो अवेलेबल है, इंडिपेंडेंट जीरो, असाइनमेंट दे दिया. दूसरा कुछ जीरो उस कॉलम में होगा तो we will cross it out. Then go to row number 2, इंडिपेंडेंट जीरो नहीं है, दो ऑप्शंस है, डोंट डू द असाइनमेंट. रो नंबर 3 में गए, एक जीरो था उसको बट क्रॉस कर दिया हमने. रो नंबर 4 में गए, एक जीरो अवेलेबल है, उसको असाइनमेंट दे दिया. ठीक है, now we will go to the column number 1, but already assignment available है. Then we will go to column number 2, यहाँ पे एक ही जीरो अवेलेबल है, we will give that assignment and we will cross the other zero from that row.
right? Then we will go to column number 3, but no 0 is available, so no assignment. Column number 4, already assignment is done. That's it. Okay. Now what to do next? Because we need 4 assignment to solve our problem or to end up with our solution, right? But right now we have only 3 assignment. अब देखो वो वाला मार्क वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है? What the procedure says, tick mark on unassigned row. Unassigned row. So this row doesn't have assignment, so tick mark कर दिया. उस रो में 0 कहाँ पे? यहाँ पे 0 है, वो कॉलम टिक कर दो. वो कॉलम में असाइनमेंट किधर है? इधर है. टिक मार्क दैट रो. ठीक है? अगेन यहाँ पे देखो, in this column there is only one assignment. एक टिक हो गया. That's it. If you repeat the process, mark row, उसमें 0 कहाँ पे? यहाँ पे. वो कॉलम को टिक मार्क कर दो. Already done. Okay. So this will be your end of the solution. Sorry, end of this process. ठीक है. अब लाइंस ड्रॉ करते हैं. लाइन कहां से ड्रॉ करना है आपको? उल्टा है देखो, अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम में से लाइन ड्रॉ करना है आपको. सो दिस वाज अनमार्क्ड रो एंड अनदर वन अनमार्क्ड रो इज O4. ठीक है. कॉलम जहां पे मार्किंग किया है, राइट मार्क है, टिक मार्क है. और see how many lines we have drawn? Only 3 lines, and all these 3 lines are passing from assignment. Always remember, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे असाइनमेंट है एंड उसमें से लाइन line is not passing from that particular assignment. So somehow we cover all the assignment with equal number of lines. So this is the identification of your correct procedure. अब next क्या करना है? Look for the values without line. So see 1, 2, 2, 3, 2, 3. So these are the elements without line passing from them. Select the least number, that is 1. अब उसमें से subtract करेंगे हम. 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, 1 minus 1 0. Then 3 minus 1 2, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2. Okay. So subtract हो गया. अब add करेंगे. add कहाँ पे करना है? intersection. तो यहाँ पे 3 पे intersection है, so add 1 to it, it will become 4. 7 के पास intersection है, 7 plus 1, it will become 8. And remaining cell, no change. So finally you will get this result after subtraction and addition. Okay. Now repeat the process of assignment. Quickly we'll do that. See यहाँ पे 2 0 है, we cannot do assignment. यहाँ पे 2 0 है, we cannot do assignment. यहाँ पे 1 0 है, we can do the assignment. Cross the other 0. Go to row number 4. Only 1 0 is available. Cross the other 0. ठीक है. Then go to the columns. Column number 1 already assignment. Column number 2 only 1 0. Do the assignment. Cross the other 0. Then go to the column number 3. No 0 available. Column number 4 already assignment is done. That's it. So all rows, all columns check किए हमने. All zeros are either assigned or crossed. Again, we haven't done 4 assignment. 4 assignment नहीं हुए complete अभी भी. So we need to follow the process of what tick mark वाला process follow करना है. Okay. So we'll do that. Tick mark on a row without assignment. So first row में assignment नहीं है, उसको टिक कर दिया. उसमें 0 देखो, जहां जहां पे भी 0 मिलेगा, mark that column. Okay. So यहाँ पे एक 0 है, ये column mark कर देते. There is one more 0, mark that column. ठीक है. Next.
इन द मार्क कॉलम जहां पे भी असाइनमेंट है वो रो मार्क करो अब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे असाइनमेंट अवेलेबल है, मार्क दैट। ये कॉलम, इन द फोर्थ कॉलम द असाइनमेंट इज प्रेजेंट हियर, मार्क दैट रो। ठीक है, एंड sorry for the connectivity. Okay, so we were discussing about this. ठीक है, now further if you proceed like this, you will not succeed in marking more number of rows or more number of columns. See, check करते, in this mark row go and look for 0, यहाँ पे 0 है, mark that column, already tick है. In the marked column look for assignment, only one assignment is this, already done the marking. ठीक है, दूसरा चेक करो, ये फर्स्ट वाला रो, मार्क रो में 0 कहां पे, यहाँ पे टिक, सेकंड 0 टिक. मार्क कॉलम में असाइनमेंट किधर है, देखो यहाँ पे असाइनमेंट है, टिक, अनदर असाइनमेंट, टिक. सो वी आर एबल टू डू ओनली these check marks. ठीक है, अब लाइंस ड्रॉ करते हैं. लाइन कहां से ड्रॉ करना है, अनमार्क रो. ठीक है, जहां पे टिक नहीं है वो वाला रो, और कॉलम में उल्टा, जहां पे टिक है उसको, उससे लाइन ड्रॉ करो. यू गॉट इट. नाउ लुक फॉर द सेल्स और वैल्यूज विदाउट लाइन पासिंग फ्रॉम देम. See 1 1 2 1 1 and 1. Okay, now select the least value which is 1 and do the subtraction. ठीक है, so the subtraction, see this 1 will become 0 0, instead of 2 it will become 1 now, 0 0 and 0. ठीक है, जहां जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे ऐड करो 1, तो 4 के जगह 5 बनेगा, 1 के जगह you will get 2, and in a remaining cell no change, no change. Okay, so finally you will get this matrix, new matrix. Again we will start with the assignment. Row number 1 all 4 0 है, कुछ असाइनमेंट नहीं कर सकते. रो नंबर 2 दो 0 है, नो असाइनमेंट. रो नंबर 3 2 0, we cannot do assignment. Row number 4 3 zeros, we cannot do the assignment. Column number 1 2 zeros, we cannot do assignment. column number 2 बहुत सारे 0 है. Column number 3 बहुत सारे 0. Column number 4 2 0, we cannot proceed. Okay, so now see, we have plenty of zeros, plenty of places where we can do the assignment, but due to the rule that independent 0 वहीं पे assignment करना है, we cannot perform the assignment, right? Now whenever you face this kind of situation कि बहुत ज्यादा zeros available है and फिर भी एक भी assignment नहीं कर सकते, okay, so break the earlier rule of independent 0, randomly do the assignment. Take any one 0 and start your assignment. ठीक है, so here what I'll do, I'll select the first 0, will put the assignment there, और बाकी 0 उस रो के कैंसिल कर देंगे, उस कॉलम के भी कैंसिल कर देंगे, बिकॉज ऑपरेटर 1 इज गिवन टू जॉब नंबर 1, हमने रैंडमली दे दिया. ठीक है, नाउ एक बार ही रूल बेंड करना है, बाकी बार नहीं. ओके, फॉलो द प्रोसेस. नाउ रो नंबर 2 2 zeros अवेलेबल है, वी कैन नॉट डू द असाइनमेंट. सॉरी, ओके, हियर तो फर्स्ट रो में यहाँ पे हमने दे दिया एज्यूम करके, बाकी 0 कैंसिल. रो नंबर 2 we cannot do the assignment. Row number 3 yes we can do the assignment, एक 0 मिल गया यहाँ पे.
cancel the other zeros from that column, then go to next row. But here there are 2 zeros, so we cannot do the assignment. Now go to column number 1 already assigned, column number 2 2 zeros hai, we cannot do assignment, column number 3 2 zeros hai, sorry ये cancel कर दिए थे हमने, okay. Column number 3 already assignment, column number 4, now in column number 4 we have only 1 zero, we will do the assignment, cancel the other zero in that row over. Now again देखो एक zero बाकी है, ठीक है. So again start with row number 1 already assignment done hai, row number 2. Now see this is the only zero available, so do the assignment and that's it. We have done 4 assignment in 4x4 matrices. Okay, so solution is over. Calculate the transportation assignment cost. This was your original problem. Put the assignment onto it, mark it on the given problem statement, and then calculate summation of assignment. So 5 plus 5 10, 10 plus 10 20, 20 plus 3 23. So that is your assignment cost. Okay, so this is over. In tomorrow's lecture we will see one more numerical just to brush up the process. Actually the assignment model is over here.